Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री सीबीसीएस फिजिक्स ऑनर्स जीई आ एमएससी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ए विषय पढ़िबा for the case of your radioactive decay. So first देखिबा half life T केतरा बही रे एठी T तळे सबस्क्रिप्ट एमती हाफ मध्ये लिखा ही थाए T half. Okay, so half life of a radioactive substance is defined as the time during which the quantity of radioactive substance is reduced to half of its original value. माने ओरिजिनल वैल्यू जोटा कि स्टार्टिंग टाइम t इक्वल टू 0 रे थिला इनिशियली रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन हेवा द्वारा जदि से ओरिजिनल वैल्यू रो अधा जो टाइम रे होउची सेही टाइम को हमें कहिबा हाफ लाइफ ओके अच्छा for this purpose we consider a radioactive sample which is containing suppose n0 numbers of atoms at initial time t equal to 0 then the number of atoms which are left behind after time t eta hame relation paithila n equal to n0 e to the power minus lambda t now from the definition of half life jota hame upare dekhila t equal to t mane small t equal to your half life that is capital T then at this time the value of n should be equal to n0 by 2 माने half is total number ताले एई दुई वैल्यू को पुट करिबा सो एठी हमें n रो रिप्लेसमेंट नेला आउ t मध्ये रिप्लेस कर देला with capital T then we are getting at the end after solving it the value of your half life capital T is coming out to be 0.693 by lambda okay that means the half life of a radioactive substance is actually inversely proportional to its decay constant that is lambda and it is a characteristic property of its nucleus okay प्रत्येक न्यूक्लियस पई एठी एटा होची तार characteristic property and it cannot be altered by any known method okay कोनोसी भी मेथड जोड़े हम याकू चेंज करि परिबा नाही so half life of a radioactive sample is shown in the figure देखो this one so this is the initial number that is n0 at time t equal to 0 तापरे एठी डीके होउची डीके हे कि देखो n0 by 2 जो टाइम रे हला सेठी हम जदी परपेंडिकुलर ड्रा करछु दिस इज कमिंग आउट टू बी आवर हाफ लाइफ टाइम okay so half life of different radioactive substances are also different eta mone rakho suppose in case of your radium half life होची 1590 years 1590 वर्ष similarly in case of your uranium it is very high 5000 million years okay so the half life period varies directly with the activity and after n half life suppose n संख्या का half life hela then the fraction of activity remains half to the power n okay अच्छा एबे नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज मीन लाइफ याको हमें एवरेज लाइफ मध्य कहि थाउ सिंबल एठी हमें देखिबो को पाउछु टाउ केतरा बही रे एमती न लिखि कि टी एवरेज ए हिसाब रे भी लिखा ही था से जा भी हो द एटम्स of a radioactive substance are constantly disintegrating हमें देखिला but all the atoms do not decay simultaneously सब जाक एटम एका संगरे decay करिवो नहीं some of the atoms will have short lifetime while others may have long lives okay so it is depending upon the nature of the atom thus the life of every atom will be different and therefore it is useful to determine the mean life of atoms okay so mean life by average life jente कहली of a radioactive substance is defined as the ratio
of the sum of the lifetime of all the radioactive atoms to the total number of such atoms which are present in it. माने mathematically जदि कहबा mean life tau equal to total lifetime of all the atoms divided by total number of atoms. Okay, so ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା suppose at initial time t equal to 0 there are n0 number of atoms, and at any instant of time t there are n numbers of atoms. Then the number of atoms now reduces to n minus dn after a very small interval of time, so that we are getting t plus dt. याको फिगर रे भी आमे बुझी परिबा देखो एठी n थिला. ओके, आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम that is dt, एठी वैल्यू यार रहेगला n minus dn. So here dn is nothing but the numbers of atoms which are disintegrating in the time interval dt. तापर आमर रिलेशन मध्य अछि n equal to n0 e to the power minus lambda t, so that the rate of disintegration एथिरो हम बाहर करि परिबा दुई साइड के आमे एठी with respect to time differentiate करिबा. ओके, सो तापर या को एबे जदि हम सॉल्व करूछु देन देखो एठी dn रो वैल्यू आसी गला एतिकी. ओके, ताले एबे dn रो वैल्यू पाइला परे हमर ए जो dn होची कोन एटा होची disintegrate जो होचंती atoms which are in the time interval dt, that is between t and t plus dt, and hence each of these dn atoms will have survived for time t before decaying. ओके, माने dn संख्यक atoms टाइम t पर्यंत सेमानकर डिसइंटीग्रेशन हेई नथिला. ओके, now total lifetime of dn atoms आमे ताले कहि परिबा केते this time into its number, so t into dn हे गला यार total lifetime. ओके, so total lifetime of all the atoms एबे केते हबो या को आमे कहिबा tau, that is total सबस्क्रिप्ट दे देला 0 to n0 of t dn. ओके, अच्छा एठी आमे जो dn रो वैल्यू पाइथिला ताकू पुट करिबा. सो एठी देखो जेहेतु टाइम dt हे गला हमको रिप्लेसमेंट करिबा को पड़िबो इंटीग्रेशन रो लिमिट. ओके, सो n रो वैल्यू n0 केते बेले थिला एट टाइम t इक्वल टू 0 आ n रो वैल्यू 0 केते बेले हबो इन्फिनिटी रे. मन रखो प्रत्येक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके हेकी पूरा सरी जिबा को इनफाइनाइट टाइम नबो. ओके, जेमति हमें देखुतिला जो ग्राफटा हमें देखिया को पाउतिला n रो एटा टाइम एक्सिस को एट इन्फिनिटी एटा टच करिवो. ओके, सो 0 हेबा पई इनफाइनाइट टाइम नेबो. ओके, ताले एबे आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ, दैट इज द मीन लाइफ. ओके, एबे इंटीग्रेशन करिबा याकू बाय पार्ट्स यूज करिबा को पड़िबो. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल. सो एट द एंड वी आर गेटिंग n0 by lambda, that is the mean life is now equal to how much tau total. ओके, एटा तो टोटल लाइफ थिला, टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय n0. ओके, हमको मीन लाइफ दरकार. सो एठी हमर जो टाउ टोटल जतकी आसिला n0 by lambda divided by n0, so n0 कटि गला हमें पाउछु केते 1 by lambda, that is the reciprocal of the decay constant. Hence the mean life of a radioactive substance is given by the reciprocal of the decay constant. ता छोड़ा आमे जदि एबे हाफ लाइफ और मीन लाइफ भितरे रिलेशन देखिबा, रिलेशन बाहर करिवा को, ताले हाफ लाइफ हमें पाइथिला केते t equal to 0.693 by lambda, मीन लाइफ पाइला हमें tau equal to 1 by lambda. So we can write t equal to 0.80 प्रिंटिंग मिस्टेक अछि 0.693 हबो एटा. ओके, 0.693 into tau बा हाफ लाइफ equal to 0.693 into the mean life. Also it may be defined as the time during which the sample activity decays to 1 by e of its original activity. Okay, एतिकी टाइम रे जो आमर नंबर ऑफ एटम्स संख्या n0 by e हे जिवो, ताले सेही टाइम को आमे कहबा कोन मीन लाइफ टाइम. ओके, सो इट ओरिजिनल एक्टिविटी माने एक्टिविटी जोटा की at the instant when the time counting was started, माने initial time t equal to 0 रे. सो याकू जदि आमे फिगर रे देखिबा, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अनदर बुक. सो एठी देखो फिगर रे एठी जेते बेले 50
50 अच्छी मैंने 50%, सो 50% अगेंस्ट जो टाइमटा आसला दैट इज योर हाफ लाइफ ओके किंतु 1/e सो ई रो वैल्यू 2.714 एतकी पकईले या तुम जब बाहर कर यार वैल्यू अराउंड 0.37 हम सो या हॉरिजॉन्टली कला जो ग्राफ सहित टच है पुणी टाइम एक्सिस सहित मैच करवा जो टाइमटा आसो दैट इज टाउ द मीन लाइफ टाइम ओके सो इन दिस वे आम देखला द हाफ लाइफ एंड द मीन लाइफ फाइनली एबे टिके देखिदबा द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ डीके एंड हाफ लाइफ ओके दुईटा कंडीशन आसी पारे फर्स्ट है व्हेन द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर ऑफ शॉर्टर पीरियड्स माने लैम्बडा वैल्यूटा हाई रहिबो ओके मन रख लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम so in case the elements which have moderately short lifetime then the value of lambda can be calculated like this eta hala to amara n ro relation now where the symbols have their usual meaning now taking logarithm on both sides and solving it या कोई differentiate कर देला so that d log n by dt equal to minus lambda आसिला ओके कहीं केमती है because d log n0 equal to 0 कहीं because n0 होची गोटे कांस्टेंट सो कांस्टेंट ऊपर डिफरेंशिएट कले तार वैल्यू 0 आसे सो जदि याको आमे जदि ग्राफ प्लॉट करिबा बिटवीन d log n that is the log of activity of radioactive element and dt then this will come out to be a straight line and the slope of this line will give the value of lambda that is the decay constant now in case the elements which have extremely short life प्रथमटा देखिला moderately short life ओके एटा कंडीशन रे पुनी बाय कंडीशन आछी ओके शॉर्ट लाइफ पुनी दुई भाग कर दूची गोटे मॉडरेट गोटे एक्सट्रीम शॉर्ट लाइफ सो जदि एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ हैला देन chiefly it will emit alpha particles and मुख्यतः भाव में alpha particle emission habo and the value of lambda is calculated as follows first of all the range of alpha particles in air at ntp normal temperature pressure रे हमें बाहर करिबा then we will apply the Jaeger-Nuttall relation that is log lambda equal to a plus b log r where lambda can be calculated at r kono it is the range of alpha particles a और b है constant okay Jaeger-Nuttall लो तुम्हें आकु for your knowledge पढ़ी पारो okay अच्छा सेकंड एबे जदि देखिबा रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जदि लॉन्गर लाइफ पीरियड रहउची तारो ताले the half lifetime of longer lived radioactive elements can be determined by counting एबे रेंज देखिबानी हमें काउंट करिबा केते संख्यक अल्फा पार्टिकल एमिशन होउची पर सेकंड from a known amount of radioactive element so this method is based on the fact that each disintegrating atom emits only one alpha particle okay मन रखो गोटे एटम गोटे अल्फा पार्टिकल एमिट करिवो and hence the number of alpha particles will be same as the number of disintegrating atom जेते संख्यक अल्फा पार्टिकल बाहला माने सेते संख्यक disintegrating atoms अछि सो हमरो एटा एक्टिविटी रो रिलेशन थिला माइनस dn by dt equal to lambda n और lambda रो वैल्यू हमें पाइला न्यूमेरिकली जेतु lambda गोटे नंबर तो माइनस सिंबल को हमें एठी नेग्लेक्ट कला thus from this relation the value of lambda can be obtained by the ratio of number of atoms which are disintegrating per unit time to the total number of atoms which are present that is dn by dt divided by n okay so this is all about the half life and the mean life Thank you.